Hello students. In economics, chapter 15, economic development, today I am here to explain you the second part. Dear students, in the previous part we saw what is economic, what is difference between development and progress, and what are the features of developing economy. It may be less per capita income or population growth or unemployment, poverty, dual economy. The points which were mentioned are important and they are necessary to be kept in mind while studying the further part. So now today we will discuss about economic and non-economic activities. What are economic activities? It means earning or spending money for exchange of commodities or services. For example, I am a principal or teacher in the school, so government is paying me. So this is economic activity for me. But at present, if someone or your parents are teaching you at home, they are guiding you, so in that they are not getting any payment for that, so that is non-economic activity. Examples are farmer, artisan, businessman, teacher, all these are involved in economic activity. And what are non-economic activities? That are not aimed at obtaining income or get in return something indirectly are called non-economic activity. For example, as I told you, a baby, when the child is born, mother takes care, so she is not getting any payment for that. Activities of social service, many are there. We will discuss this thing in the further part. So in the Indian structure here, generally what we have to see, that various occupations and economic activities are there. They are divided into primary, secondary and service sectors, means which is known as tertiary sector. So we will study in this part about that also. And then what are the factors of production? Means land, capital and labor, and the businessmen, the entrepreneurs, how they work and what they do for the production, that we will study. And problem of resource allocation. Resource means it may be natural, it may be man-made, whatever resources are there, when they are divided, allocated. So what are the problems faced? So students, again I am reminding you, keep the book with you while listening or watching this video. Page number 122 and 23 we are discussing at present. So let's go to the next part. The structure of Indian economy, as I told, divided into three parts. Here just I will explain it separately also. Primary sector, agriculture and agriculture related activities such as cattle rearing, cattle breeding, fishing, poultry farm, collection of forest products, mining of raw metal are primary sector section. Means this primary sector section, this is the most important sector actually, the basic sector through which we come to know about, see, agriculture, forestry, means from forest different things are collected, poultry or animal husbandry, or mining and quarrying. Mining means whatever basic minerals and all we get, that is also that production, because that is the basic thing from which other products can be made. It may be a small needle or a big machine. For that iron ore is required, so that mining activity is considered the primary sector. Yesterday I explained you the example of a farmer who sells the milk directly after milking the animal, cattle, cow or buffalo, and someone else is there, so they are making different products and selling chocolate or the sweets or whatever directly to the customers. So that is the next, second and third level activity we'll try to understand. So primary sector. Then comes the secondary sector. So in secondary sector, what are the things? Manufacturing means which uses output of primary sector for further production. फर्दर जो प्राइमरी सेक्टर में से मिला उसमें से नई प्रोडक्ट्स बनाने का. स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर देयर, फैक्ट्रीज, construction, electricity, gas and water supply are included in this secondary sector. It is a key sector between the primary and the service sector. This is the main which helps them. For it is written here, electricity, gas and water supply, they are needed. Without this you cannot imagine any products to be made, final products, so they are used. Then machine processing,
different machine processing are there. From that different products are made. This also is acknowledged as industry, which includes production from small pin to gigantic machine. As I told you, वो छोटी pin हो या बड़ी machines हो. This is in secondary section. Then comes the tertiary sector. The pronunciation is tertiary or we call it generally service sector. तो इसमें क्या आता है? For example, you can see here bank, healthcare, doctors and hospitals. Then it may be transportation to different sources like trade and communication, जो व्यापार होता है वो. Then communication services, this mobiles and net and all services. Airways, education also comes in this. It is a service sector, means where you are not getting a direct product. For example, in bank your money is there, but the bank is keeping it safe, and whenever you need, it is providing you. So they are providing service. When you are going somewhere from Mehsana to Ahmedabad or Bombay, so by train or by vehicle, so the vehicle is not owned by you. You are just paying the whatever the ticket charge is there, you are paying that and you are enjoying that service. So these are services, courier services, postal services. These all sections are included in service sector. Normally the primary sector dominates the basic in developing countries. Primary sector contributes the most employment generation and national income. Why? Yesterday also we discussed in the previous chapter that farming, 60% nearly are engaged in farming in most of the basic. However, as there is rise in economic development, magnificent significance of primary sector decreases in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases. Means from one thing or one product which is iron ore, take example again and again of iron ore and milk, two you can understand easily. Iron ore is one thing, milk is one thing, it may be cow, buffalo or any other milk, but from that how many products can be made? Curd can be made, ghee can be made, sweet can be made, chocolate can be made, powder can be made, many different things. Same way from iron ore, small pin, the injections pin, or then the nails, then the clips, then smaller to bigger, then to big machines, whatever tools are made. So that is the manufacturing sector, taking it and making new products from that. So that is more important. So when primary sector to service sector becomes better, the economy develops. Now dear students, coming on page number 123, the factors of production. Keep in mind that this is not a live class, it is a video. So whenever you feel that sir is going on speaking, we are not able to understand, just give a pause, listen it again, read it, because this is the situation we all are facing. So just you try this new pattern. Now factors of production. Production is done with the help of natural resources and labor. Different types of tools are used for production. These factors are divided into 4 parts, mainly like land, labor, capital and entrepreneurship. So what they help us, how they are important. So land, generally land is the basic thing, means in the primary sector. In normal sense land is the upper layer of the surface, but in terms of economics, यहाँ पे जमीन, यहाँ इसका meaning नहीं है. Land means different types of natural resources which include forest, river, mountains, minerals present in the interior of the earth, metals etc. on the earth's surface. Thus land is natural tool for production. तो ये जो चीज़ है इसमें यहाँ पे land का word meaning नहीं लेना है, all gift, free gift from nature, जिससे हम प्राइमरी सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कैटल, फिर से कैटल का एग्जाम्पल, लेकिन उनको जो घास मिलती है, वट एवर दे आर गेटिंग फॉर देयर फूड, दे आर गेटिंग फ्रॉम लैंड ओनली. सो फर्स्ट पार्ट इज वो प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है, वो वॉट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, दीज वी आर द 4 फैक्टर्स. इन दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लैंड, मीन्स वी कैन कॉल इट द बेस और बेसिक नीड. देन सेकेंड इन दैट is capital. Here in the slide third it is, but just keep in mind second, capital. Capital means man-made instrument helpful in production process such as instruments, tools, houses etc. are included in capital. यहाँ capital का meaning है the money invested in that, the money required for that. For example आपके पास सब है
लैंड है, इसमें फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन है, लेकिन उसमें काम करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इफ़ यू डोंट हैव, सो हियर दैट प्रॉपर्टी, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, सो द मेंटल, द machine and investment, man-made factor for the production, they are that. Then comes the labor, where human being, men and women, they have to work. Labor means mental or physical, more important thing. Many times people have a mind that this is a labor work. Labor work means not only physical, mental also. Mental work is more important than physical work, because first you decide in your mind that you have to do this thing and plan and then execute, फिर आपको physical work करना है. So labor means mental or physical work done with the aim to obtain monetary gain, मतलब मनी गेन करने के लिए जो काम किया गया हो वैसा उसको प्रोडक्शन में गिना जाएगा. लेबर इज ए लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर, आर्टिशियन इज कॉल्ड लेबर. It is labor work, but somewhere it is mental, somewhere it is physical. So this is labor. Then comes the most important, which helps the country to become developing through to developed. Means if you have to make the nation more rich or developed, you need entrepreneurs. इसका simple meaning होता है साहस करने वाले लोग, व्यवसायी, the professionals and all. The person who efficiently combines the three factors above mentioned, land, capital और labor को combine करके जो व्यक्ति, today many examples are there in this media, or we can say the fast communication period time, that many people, they don't have either land, capital or labor, but they have the idea. Banks provide them the loan, they have an idea, they work mentally and they plan something and then they work. So the three factors, production, land, capital and labor, is called entrepreneur, जो इनको combine करता है. The process of coordinating the three factors of production in profit making process, उसमें से कुछ पैसा बनाने के लिए, profit बनाने के लिए, it may be profit maker or loss bearer, both it can be. So for that, whatever work is done, that is known as entrepreneurship, and the person is known as entrepreneur. Entrepreneur के कोई कोर्स नहीं होते हैं, कोई उसका फिक्स को के सर हाउ वी कैन बिकम ए एंटरप्रेन्योर. यू कैन, you have to use your mind, you have to study at present whatever is taught, and then from that you have to think where you are better, in which subject, in what work you can do better and happily. तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. देन नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको बात की. इसमें मेन थिंग्स आर अगेन एंड अगेन यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज विथ यू, वो लैंड हो कि लेबर हो, कैपिटल हो, वट एवर रिसोर्सेज सबके पास हो सकते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज अच्छी तरह से करें और बेस्ट उसका बेनिफिट लें, मैक्सिमम बेनिफिट लें. देन ओनली यू कैन गेट द बेनिफिट एंड यू कैन हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो फास्टर. और इन दैट entrepreneurs are more important in role. Now after that we have to discuss about the distribution of factors of production. Distribution of factors means कहाँ कितना. For example, in Rajasthan, a big part of Rajasthan is desert part. For example, Himachal Pradesh, it is a hilly region. Assam and other northeastern states, they are having continuous flood conditions throughout the year, means nearly 4 to 6 months it is flood condition, and because of that the land cannot be used, their factories cannot be established in hilly regions also, in the deserts also. So जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ कितने कैसे होते हैं वो देखना है, एंड टू थिंक अबाउट इट. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड while resources to fulfill them are limited. जो resources है natural resources, for example only at present we can say only one resource is unlimited, that is solar energy, but the land, the water and all, they are limited. Today or tomorrow they are going to come to an end, वो पूरा हो जाएगा. ज़मीन कितनी है, आप जितनी दुनिया में है उतनी. प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट हमें हाई जाना चाहिए, हम ब्रॉड होते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं उसकी जगह. सो दीज आर, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. No nation of the world has resources in unlimited quantity. There will be scarcity of factors of, मतलब कमी होने वाली है, factors of production. As a result, every country faces problem related to allocation of resources. मतलब कोई country बोले कि हमें resource मिले ही नहीं हैं, हम क्या करें. So whatever resources you have, Israel is the best example of this. Just study about for 5 to 10 minutes. Ask your parents if they may be knowing that Israel, it has the least rain, then also they are growing good in farming and all. They have less resources, they have less water, then also they have produced many things. And
they are working and we can consider them a developed economy. So every country faces problem related to allocation of resources. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. So we have to think about it. The means what to produce, क्या पैदा करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. होम टू प्रोड्यूस मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ वीट का प्रोडक्शन आज से 20-30 ईयर्स पहले बाहर से मंगवाने पड़ते थे. वी हैव टू इम्पोर्ट many things, sugar also, but slowly time changed, our production increased, new seeds and all, new techniques, government, scientists, farmers and all, they worked. Now they are producing too much. Good, it's good. So we don't have to import. What we can do now, we can export. So how to produce, that the government helps, the techniques helps. And for whom to produce, for example, if many things are produced but no buyer is there, then it is useless. So for whom to produce, rich or poor? So these points we have to discuss in this. And here, just a minute. Now first is unlimited wants. Human wants are uncountable, मतलब हमारी इच्छाएं अथाह हैं, एक पूरी होती है और दूसरी हम तैयार रखते हैं. And unlimited, so many wants originate from one's want, इच्छा से. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. अभी का एग्जाम्पल लेते हैं. रिसेंट कोरोना के कारण किस चीज़ की डिमांड हो गई, किस चीज़ की? सैनिटाइजर्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सारी. सो बिकॉज ऑफ, it may be because of the situation, we can say, and development of science and technology, it helps them. Then thus because of many reasons wants become unlimited. So in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants. For example, आपके पास पैसा है, you have to invest something, कि आपको एक vehicle लाना है. So you have to decide how much money you have and what are the availability. It may be a scooter, it may be a 3-wheeler, it may be a 4-wheeler, it may be a big 4-wheeler, whatever it is. So you have to make selection among your wants. So then comes important order in term of necessities. So important order means what are your necessities, आपकी requirement क्या है. unnecessary आप ऐसे कुछ भी यूज़ करते रहेंगे, so you may feel that there is scarcity. But individuals has to decide which want is more important. यहाँ want का meaning है wish, इच्छा, requirement. He has to satisfy his requirement in order of priority. Priority means, for example, the child is in 10th or 12th or board exam. So at present, that time, the family stops other expenses and all. They feel that for 10th or 12th, money may be required. The child may go in some higher courses, higher studies. So at that time, the fees and all, it will be required. For that, vehicle may be required. He may be to be kept in hostel also. So for that, they start saving from 10th, 11th and 12th only. And then that save money means they stop expenses of their clothes, their outing, or many unnecessary things. Parents, many times, they stop unnecessary expenses for their child's future. So this is priority. Child is always a priority for the parents, dear students. So respect your parents' wishes. Just see that how many things they are sacrificing or they are letting it go. They need, but they try better for you, not only for themselves. So whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on others. They feel that our wishes, mummy and papa, कि हम अपनी इच्छाएं बाद में पूरी कर लेंगे, पहले बेटे या बेटी की इच्छा पूरी करें. So they always wish this thing. And limited resources. Third point is factors of production mainly include a natural wealth and man-made wealth. All these tools are limited. ये भी फिर limited है. So they have to be utilized judicially. अब आपके घर में वो खाने की चीज़ हो, फिर आप ऐसा करें कि बस आप ही खा जाए, आपके भाई बहन के लिए ना रखें. तो आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर. फॉर एग्जाम्पल घर पे एक ही व्हीकल है और आप भाई बहन दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, एक 10th में एक 12th में. सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू प्लान इन सच ए वे सेट प्रायोरिटी इज टू बी गिवन, और दोनों या तो साथ में यूज़ करें और एक ही बार में सब काम हो जाए. मार्केट जाना है, सो वंस एट ए टाइम वट एवर यू मेक ए लिस्ट एंड ऑल, सो यू कैन save the fuel also and time also. So you have, in limited resources, you have to decide and judicially utilize. Judicially means कि शायद पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पैसे तो आपके ख़त्म हो सकते हैं. बाजार में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आपके पेरेंट्स की अर्निंग उसमें स्पेंड हो सकती है. अननेसेसरी
नॉट रिक्वायर्ड देन ऑल्सो नया मोबाइल, नया गैजेट, नई थिंग्स आप मांगते जाएंगे. सो यू हैव टू थिंक जुडिशियली. कीप योर पेरेंट्स अर्निंग एंड देयर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ऑल्सो इन their mind. Don't go on status. Don't think that your friends and your circle, they have this thing, so you should have. Always keep your parents situation and respect that and cooperate with them. So these are the topics related to that limited resources. And fourth is alternative use of the resource. Resources to satisfy demands are limited. Not only this, they have alternative usage also. मतलब उसके ऑल्टरनेटिव यूज. फॉर एग्जाम्पल इफ वीट इज सोन इन द मीन्स उसकी जगह बाजरा और मेज और ग्राउंडनट भी आप ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो अनदर यील्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. एक बार वीट उगाया तो उसी में वो नहीं हो सकता है, उसको फिर आपको टर्न वाइज देखना पड़ेगा. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स ऑफ एलोकेशन of resources. What methods are there? This always keep in mind that this we have to study as economics in general, but I am trying to give you example of our country so you can correlate it, you can understand it in a better way. Every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources. Allocation means उसको जो बांटना होता है. For example, teachers, I have like for example science teachers, 4 teachers are there, science and maths teacher. From that it is divided. Okay, these teachers will take in this class and this teacher will take science and this teacher will take maths. So that is allocation of periods, their classes. So same way allotment of resources is mainly done by 2 methods. Here now again coming back to resources, market mechanism and socialist system. So in that we both systems are opposite to each other. This is means how we countries, अलग अलग countries, इसमें से नया एक जो मिक्स होके बनता है दैट इज मीन्स मिक्स्ड, मिंगलिंग बोथ द सिस्टम्स, उसमें भी डेवलप हुआ है दोनों का बैलेंस. कि फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट ऑल फैमिलीज इन सिटीज पर्टिकुलरली, इट मे बी महसाना, इट मे बी अहमदाबाद और बड़ौदा और विसनगर, वॉट एवर, डिफरेंट थिंग्स आर हैपनिंग. Cities now we are having a modern type of lifestyle. Sometimes we go out to for lunch or dinner in hotel also. We wear new western dresses, jeans and t-shirts also. And village they are having old fashioned type. So this is mix that both we should respect the person, not the dressing and all. So we are in a mixed type of culture at present. It is going on. On birthdays we cut cake, on Diwali we lit the diyas. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चल रहे हैं. सो उसी तरह से इकोनॉमी भी आज मिक्स होती जा रही है. सो व्हाट इज मार्केट सिस्टम? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Nations like America, Japan have made their economies development through market system. Market system is also called capitalist system. Means here in this system, importance is given on profit making, money making. Resource allocation is done on the basis of profit scope. In this system, in production, its related activities, profit is at center. इसमें किसका क्या भला होगा वो नहीं, लेकिन what benefit the country or the firm is going to get, वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. People invest in those industries where they find more scope of profit. Market is completely free in this system. Means market में their prices and all, in these countries also कुछ basic things है, bread है, milk है, food items and all these things, their costs are controlled by the government. Other things the market or the companies are free to decide the cost and all. So this is free type of economy. In this, government does not specify any policy or does not play any role in this method, and competition is always there. For example, a product is there of 1,000 rupees, one company is only making, then second company starts. So to maintain the market or to keep the market under control, other company reduces the prices and brings it up to 900. Then third company also comes, then they bring the price. If 10 companies are producing, it may happen that now people may get that product at 500 rupees. So you may think that previously how the company is working, but they were gaining too much. Now they are taking very limited benefit or limited profit. So in that free competition in market, the free economy is there. So there, if many companies are there, the customer is in benefit. This type of. Now what are the features of market mechanism system? Ownership of resources of production. Resources of production इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट, मतलब किसी एक व्यक्ति की होती है या कोई ग्रुप हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी इट में भी. प्रॉफिट इज ए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. प्रॉफिट सबसे सेंटर में होता है.
कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, दिस इज द थिंग। अभी आप मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स या जो सुपरमार्केट बोलते हैं, इन दैट यू गेट ए चॉइस। ऐसा नहीं कि आपने मांगा भाई आटा दीजिए ना, तो वो आटा उसने दे दिया, लेकिन आज आप आटा मांगेंगे तो 10 कंपनी वो बताएगा, तो यू गेट ए बेनिफिट। एनी प्रोडक्ट यू गेट मेनी कंपनीज चॉइस, द प्राइस, द थिंग्स, डिटेल्स आर रिटन ऑन दैट। सो इन दैट ऑल्सो इट मे बी चांस दैट वो नन ऑफ देम मे बी गुड, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर चॉइस इज देयर, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर, एक तरह से इंटरफियरेंस मतलब वो मार्केट में पीपल आर फ्री, किसी को फोर्स नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्टीमेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वट एवर प्राइसेज आर देयर एंड ऑल, बट इन जनरल देर इज नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है। एंड मार्केट इज फ्री एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं वो प्राइस, मान लीजिए कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि देर इज नो बेनिफिट इन दिस, तो दे कैन स्टॉप द प्रोडक्शन ऑल्सो, they will stop the production. So these type of things are there in market mechanism. What are the benefits? ये features हैं इसके, general features। अब इसके benefits क्या हैं? market जो mechanism system है, what are the benefits? Economic freedom of individual is protected, मतलब आप free हैं। ये नहीं कि आज से पहले, कई सालों पहले, आज से 25 साल पहले की बात करें तो इंडिया में एक ही कंपनी का स्कूटर आता था, योर पेरेंट्स, आई कैन नॉट नेम इन द क्लास, एक ही कंपनी का स्कूटर आता था और वही लेना पड़ता था। वी हैव टू बुक, 2-3 साल में आ जाता था, तो वी फेल्ट अवरसेल्व्स लकी। उस समय ना 3 स्ट्रोक था, ना 4 स्ट्रोक था, ना कुछ था, उसमें एमिशन भी फ्यूल का काफ़ी होता था। वो स्कूटर जो था एक ही कंपनी का था, जो भी कलर मिले, हमें चॉइस ज़्यादा नहीं मिलती थी। बट आफ्टर दैट द टाइम चेंज, सेम थिंग इज़ विथ मोबाइल ऑल्सो। When it started before 20 years, small mobiles of that keypad type were there, and they used to cost 3,000 to 4,000 rupees minimum. And today, at that cost, you can get a very good phone. So this is the benefit. Resources of production are utilized to the greatest extent and efficiently. जो production के resources है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, better चीज़ और efficiently बनाई जा सकती है, and it is used. Abundant production may be done. बहुत ज़्यादा production किया जाता है, जैसे आज आप देख रहे हैं। ओके, मोबाइल्स में ये हो चुका है, एंड दिस थिंग समटाइम इट मे बी यूजलेस ऑल्सो, बट फॉर कस्टमर इट इज गुड। न्यू एक्सप्लोरेशन कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर। मीन्स मार्केट में मनी, पैसा घूमता रहता है, नई नई चीज़ें उसमें, नए एक्सप्लोरेशंस मीन्स न्यू थिंग्स। वो आज आप टूरिंग के लिए नए नए डेस्टिनेशंस बन चुके हैं। पहले तो ऐसा होता था कि ये 1 या 2 जगह हम घूमने जा सकते हैं, आज नई नई जगह डेवलप हो रही हैं। सो दिस इज कंटिन्यूसली न्यू एक्सप्लोरेशंस, एंड इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि नई जगह आप घूमने जाते हैं तो वहाँ होटलिंग डेवलप होती है, वहाँ पे विजिटिंग, उसके बाद ट्रैवलिंग, जो मीन्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको, जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनको, बैंक्स को, सबको बेनिफिट होता है। देन द क्वालिटीज़ ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, दिस इज फैक्ट, कि अच्छी क्वालिटी आपको लोअर रेट में, एंड द सेम रेट वेर यू गेटिंग द मिनिमम क्वालिटी, नाउ यू आर गेटिंग मैक्सिमम क्वालिटी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम्स, जो आपको बताया। मीन्स इसमें कंज्यूमर जो बोलते हैं ना, द कंज्यूमर इज द किंग, तो ये मार्केट में आज की स्थिति ऐसी है। यू कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ थिंग। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज पार्ट 2 of the economic development is the limitations of the market mechanism system, कि इसके benefits तो हैं, लेकिन इसकी limitations, मतलब जो disadvantages हैं, drawbacks क्या हैं। तो in spite of having many benefits, इसके थोड़े disadvantages हैं। Because of keeping profit in the center of production, commodities are produced more in quantity and production of luxurious commodities. Basic requirement, आज एक common man की, poor man की requirement की जगह rich लोगों के लिए और जो पैसा स्पेंड कर सकते हैं उनके लिए मार्केट भरा हुआ पड़ा है। तो दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड रोल टू द स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। कि जैसे आज पानी की बॉटल है, हम घर से भी पानी लेके घूम सकते हैं, लेकिन सीधा हम 20 रुपये खर्च करके पानी का एक स्टेटस मान लेते हैं। सो इसके कारण रोल ऑफ स्टेट को, इसमें गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्रॉम लास्ट ईयर वी हैव सीन दैट प्लास्टिक पे धीरे धीरे, तो ये रिसोर्सेज हैं, यू कैन टेक ए क्लॉथ बैग फ्रॉम होम। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। ये सबसे ज़्यादा हो रहा है आज, कि आज आपको पूरा नॉलेज नहीं है और आप कंज्यूमर की तरह न खरीदना है, वो भी चीज़ खरीद रहे हैं। आपको लगता है मेरे लिए ज़रूरी है, अगर ये नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी में ये हेल्थ नहीं रहेगी। विटामिन ए से लेकर जेड तक के सारे विटामिन अलग अलग, वो चॉकलेट में भी लिखते हैं, पाउडर्स में भी लिखते हैं, सब में लिखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। यू ईट हेल्दी थिंग्स एट होम कुक थिंग्स। फ्रॉम लास्ट 6 months यू आर डूइंग दिस थिंग। आप कोई बीमार हुए क्या? कोरोना इज ए सेपरेट थिंग, ए डिफरेंट थिंग, बट आप 6 महीने से खा रहे हैं तो कोई बीमार हो गया क्या? शायद बीमार जो रूटीन में होते थे बाहर का खाने से, मैदा खाने से, वो शायद कम हो गए हैं। सो वी आर एक्सप्लॉइटेड अट्रैक्टिव थिंग्स, और ये सब बता के हम जो कर रहे हैं उसके कारण ये पॉसिबिलिटी हो रही है। एंड देन लास्ट इज इन दैट
ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, मतलब रिच रिचर होते जा रहे हैं ऐसे बिजनेस करके एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड पुअर पुअरर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। एंड लास्ट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, मतलब फियर ऑफ मोनोपोली कि भाई मतलब मोनोपोली मतलब बाजार में इस जगह से ऐसी चीज़ मिलेगी, छोटी दुकान वाले का काम नहीं होगा, बड़ा मॉल ही होना, शोरूम ही होना चाहिए। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मतलब कि फाइनेंशियली पीपल इनस्टेबल, कि स्टेबल उनकी फिक्स इनकम नहीं रह पा रही है, आज है कल एकदम से बंद भी हो सकती है। आज सिंपल फ्रूट वाले, सब्जी वाले या जो सिंपल वेंडर्स थे, हॉकर्स थे, उनके लिए एक फियर हो गया है क्योंकि बड़े मॉल्स में एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो व्हाट अबाउट देम, दोज यूज्ड टू सेल इन द आउट ऑफ सोसाइटी और नियर इन ए स्मॉल मीन्स 1000 हाउसेज और समवेयर। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इसके कारण लेबर का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बिकॉज एट मैनी प्लेसेज वी आर नॉट गेटिंग जॉब एंड ऑल। सो उनको ये लगता है कि इफ़ यू वांट टू वर्क, today you can see the students, the youth and all, they have learned computer, they are educated and all, but they have to work as a simple labor or a simple job work or simple sales person. So these are the limitations of market mechanism system. So this is about the one type. Other type, socialist system, we will study in the second part. So try to understand this thing, and next part, third part, I will explain it tomorrow. Don't worry about the unit test. Whatever is taught in history, geography and economics, from that only questions will be asked. So prepare it very calmly without any hesitation, कोई डर रखे बिना, फियर रखे बिना या मन में अननेसेसरी कोई क्वेश्चन लाए बिना, शांति से जितना आपको समझाया है उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर। सो आपका जो 29th का पेपर है आराम से आप दे पाएंगे। एंड होप you are studying well at home and respect your parents. Stay safe, stay healthy. Thank you.